Well, breaking news coming in as far as the Nepal protests is concerned. The Nepal government is likely to revoke the social media ban, is what we are learning at the moment. The social media ban is likely to be lifted very soon. Amid protests, the government is now set to revoke the ban. Remember, this ban was on apps like X, Facebook, and that is now set to be lifted, is what we are learning at this moment. At least 16 people, they have died in the protest against corruption, against malgovernance, and the ban on these social media apps. In fact, hundreds of people are currently injured. There are many who are there in the hospital at the moment. Nepal is in fact witnessing one of its biggest youth-led uprising in the recent years. And amid the protests, what we are learning at this point of time is that the Nepal government, it is likely to revoke the social media ban. It is likely to be lifted very soon, and this is all amid the protests that the government is set to revoke the ban on apps like X, on Facebook and Instagram, that is to be lifted. नेपालको कानुन मान्नुपर्ने, कुनै विदेशीले कारोबार गर्यो भने कानुन मान्नु नपर्ने। जेनजी पुस्तालाई पिर पर्यो अरे, राम्रो लागेन अरे। जेनजी पुस्ता भन्ने चाहिँ नि कुनै ठगी खाने भाडो हो। तपाईं आज यो प्रोटेस्टमा किन आउनु भयो? Is this your first time in the protest? Yeah, this is my first time. I'm against the corruption. तपाईले करप्सन भइराछ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भयो? अब हेर्नुस्, नेपाल सरकार एकदमै अब झुट बोल्नु झुट बोल्दिन म। नेपाल एकदमै गरिब देश हो। मान्छेले सरकारले तलब खान्छन् 77,000 75,000। अनि विकली मल्दिप्स ट्रिप, युरोप ट्रिप कहाँबाट आइराछ त? हाम्रै ट्याक्स भरेको पैसाबाट। अब यदि त ट्याक्स तिरेको पैसा सही ठाउँमा लगानी भएको भए अहिले हामी भत्केको रोडमा हिँड्नु पर्थ्यो त। यो त्यही भएर करप्सन त भएको छ। All right, Rajneesh Bhandari, he's joining us from Kathmandu, is a senior journalist. Rajneesh, from what we are learning at this point of time, the government, it is set to, revoke the ban on these social media apps. Give us the details. So what we know so far is that a cabinet meeting is being held at 6 o'clock. That's nearly after 45 minutes from now. And it looks that the government is trying to discuss this issue and put its decision. But it looks like the protest, how it went, it's one of the biggest uprising I've seen in recent years. I covered the 2005 and 6 April moment in Nepal. That was one of the biggest that overthrew monarchy in Nepal. And after that, I think this one that was actually led by youths, especially the Gen Z. This is the first day. And we saw thousands of people on the street, that started at around 9 a.m. in the morning, and right now it's like 5:15 local time in Nepal, and the protest is still ongoing. And you can see behind me, there's still, the protesters are actually throwing stone against the police, and the police is also throwing stones against them. So it's still ongoing. Rajneesh, can we clearly say that the government has caved in due to the pressure, due to the protest that is taking place? We are yet to officially hear the government's position at the moment. We are yet to see their stand and their statement on this issue. I think that will be more clear once they have the cabinet meeting. Because this government is actually is run through like different political parties, so they are discussing within the parties as well how to respond to this, and it will be more clear officially once the meeting is over. Rajneesh, also give us a sense of the scale of this protest, how widespread it is, and just break it down for us. I was at the location since early morning, and it is quite surprising to see students joining the protest, students in the school uniform joining. I talked with a few of the protesters and asked them, like, why are you joining? What's the demand? And they were saying the protest is actually, they're frustrated with how the government is working. They're frustrated with the corruption in the country, and they really want to have their voice. And it seems that after the government's ban on different, 26 different social media platforms, it have been very, it seems to be very frustrating for them. And they kept, protesting. And late in the afternoon, there was a, huge tussle between
the police and the protesters. That was in the middle of the, in the afternoon. And when they crossed the barricade that was put by the police, the protest started escalating. And then the police started throwing tear gas, and the protest turned, the police started firing rubber bullets. And like we saw casualties, like more than a dozen people are dead in this protest. Rajneesh, I also want to get a sense of how significant is this particular movement as compared to the past, mass uprising there in Nepal's political history. Just give us a sense of that. This seems to be important at this juncture of time because, as you know, every day, nearly 2,000 people leave Nepal to the Tribhuvan International Airport for jobs and other things. And this shows the kind of quite a frustration among people about opportunities in the country, about the needs and their demands and the way of living. So there seems to be a kind of need for jobs in the country, which they are quite frustrated of not getting it. And this protest also relates to the social media campaign on TikTok. Like other platforms are banned at the moment. So what they are protesting on social media is they're exposing, especially the kids, the children of political leaders who seems to have a very wild, well brought life, and then they've got pictures showing them buying, big and especially very much the things that they're buying is way out of reach of many young people. So that's exposing, and they're also bringing that to the street today. So this seems to be significant at this time because the youths are demanding, and it's also time that the government responds to this on time. In fact, one of the members of the National Student Union in Nepal, Pushkar Bikram Shahi, is also joining us on the broadcast at this point of time. Pushkar Shahi, what made the students, take to the streets in such large numbers? We are seeing these images since morning. Was the ban on social media the tipping point, or was it something else? Thank you, sir. ये आज की बात भी नहीं है, ये जस्ट सोशल मीडिया बैन की बात भी नहीं है। बड़े लंबे समय से नेपाल में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कारण से यूथ लोग, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड भी थे, और मेनली जो ब्यूरोक्रेट्स में जो एक साधारण आदमी के लिए जो समस्या उपजन हो रहे थे, उसकी वजह से सब में एक लेवल का फ्रस्ट्रेशन पैदा हो चुका था। क्योंकि इधर जो कुछ भी काम हो रहा था वो कि हायर पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से ही हो रहा था, और कि आपके नेक्सस की वजह से ही हो रहा था। इसलिए जो एक फ्रस्ट्रेशन था, अभी जो इंडोनेशिया में एक ट्रेन आया था, नेपोकिर का ट्रेन, उस ट्रेन को इधर के जेनजी लोगों ने कैरी किया। उसी कैरी में जो फ्रस्ट्रेशन अंदर से बैठा हुआ था, वो सब फ्रस्ट्रेशन आज निकालने के लिए वो सब जमा हुए थे। उसी में से एक ये सोशल मीडिया बैन भी नहीं, वो एक कॉज है, पर भी जस्ट सोशल मीडिया बैन एक कॉज नहीं था। ये बहुत लंबे समय से बहुत चीज के फ्रस्ट्रेशन से ये आज ये इसमें मैदान में आए हैं। फिर एक बात बताइए, आप जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेके, क्योंकि सोशल मीडिया तो वहाँ पे बैन हो चुका है अभी फिलहाल, तो किस तरह से कोऑर्डिनेट हो रहा है ये प्रोटेस्ट? ये अभी हमारे नेपाल में अभी दूसरे सारे सोशल मीडिया तो बैन हो चुके हैं, फिर भी टिकटॉक जो इधर अभी अवेलेबल है, टिकटॉक के माध्यम से अभी एकदम बम्बार्ड हो रहा है। आपको एकदम स्टूडेंट लोग डिस्कॉर्ड में भी चैनल बना के उधर डिस्कस कर रहे हैं, उधर वो लोग कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद उधर वो टिकटॉक में वो डिफरेंट फेक आईडीज क्रिएट करके उन्होंने वो डालना किया, स्टार्ट किया। उसके बाद जब ये बम्बार्ड होने लगा, जब इसने वो एक पिक मोमेंट ले लिया, उसके बाद सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारे क्रिएटर्स, सारे जो ये पब्लिक स्टंट करने वाले लोग होते हैं, वो सब लोगों ने इनको जब वो टिकटॉक में इसका जो क्रेज देखा, उसके बाद ये इस तरह से फैल रहा है। पुष्कर, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के पहले
क्या किसी तरह का एफर्ट डाला था कि आप जो है वो गवर्नमेंट से बात कर पाएं, गवर्नमेंट को रीच आउट कर पाएं, उसके बाद फिर ये प्रोटेस्ट करें? क्या इस तरह का एफर्ट था आप स्टूडेंट्स की तरफ से? हाँ, इसमें क्या है कि आपको बताना चाहता हूँ, जब उन्होंने वो डिस्कॉर्ड में लिंक क्रिएट किया था तब मैंने ये उनका ट्रैक करके मैं भी उधर पहुंचा था। पर जब मैंने उन लोगों का ग्रुप डिस्कशन कॉल में बात सुना तब उनका बात इतना समझदारी के जैसा था। वो लोग पॉलिटिकली बहुत ही अनलिटरेट थे, उनके पास पॉलिटिकल लिटरेसी एकदम कम था, पर उनके जो अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था वो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन के रूप में निकल रहा था। इसलिए उनको जस्ट जो इंडोनेशिया में, जो श्रीलंका में जो उन्होंने रिवोल्यूशन देखा, वो रिवोल्यूशन की बॉर्डर में वो उन्होंने नेपाल में भी जस्ट उनके दिमाग में एक क्या फैंटेसी की तरह क्रिएट हुआ कि हम भी यही करेंगे और हम भी चेंज लाएंगे, क्योंकि वो चीज श्रीलंका में भी हो चुका है, वो चीज इंडोनेशिया में भी हो चुका है, अब हम नेपाल में करेंगे। इसलिए उन्होंने किसी भी तौर में सरकार से ना कुनै चाहिँ इफोर्ट किया बात करने के लिए, ना डिस्कशन के लिए। उनका जस्ट एजेंडा क्या था कि आज सितंबर 8 जो उन्होंने एकदम अनइंटेंशनल तरीके से वो डेट क्रिएट किया था, जो टिकटॉक में बम्बार्डमेंट के वजह से वो एकदम फेमस हो गया। सितंबर 8 में हम आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन की वजह से सरकार को भी हम गिरा देंगे। हम जो सरकार में करप्शन करके बैठे उन सबको हम पनिशमेंट के दायरे में लाएंगे के सोच के आधार में उन्होंने ये सब किया। आपके प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है वो कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी डिसेंट कर रहे हैं, वो सारे के सारे पपेट्स हैं, वो कठपुतली हैं। कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप उस पर? हाँ, एक बात जो थी, जब हमारे जनरेशन के जो स्टूडेंट्स जब इस मूवमेंट के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब जब उनको हमारे जनरेशन के लेवल के स्टूडेंट को एक एक कारण चाहिए था आपको इस मूवमेंट को बड़ा करने के लिए। और प्रधानमंत्री के लेवल में बैठ के आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के उन्होंने वक्तव्य दिए वो एकदम ही यूजलेस था। इसकी कारण की वजह से ज्यादा जो फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन के पीपल थे वो फिर से इग्नाइट हुए और वो आके आज इतने बड़े रूप में एग्रेशन उन्होंने ये क्रिएट किया। वरना ये इतने बड़े रूप में जा नहीं सकता था। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एकदमै तपाईँको यूजलेस स्टेटमेंटहरू दिए, उनके आधार में से ये बड़ा मूवमेंट बन गया। पुष्कर, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ पे लोग अरेस्ट हो रहे हैं, 16 लोग मर गए हैं। क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे अभी भी? हाँ, ये जब स्टूडेंट में जब गोलीबारी शुरू हो चुकी थी तब उन्होंने जब संसद भवन पे ही कब्जा कर लिया था, तभी कर्फ्यू चालू हो चुका था। पर फिर भी स्टूडेंट लोग ने आंदोलन करना रुका नहीं। अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस डिस्कॉर्ड लिंक में वो डिस्कशन कर रहे हैं, अभी मैं उसमें भी प्रेजेंट हूँ। उसमें वो लोग का कंटिन्यूटी डिस्कशन क्या चल रहा है कि हम कल फिर से इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। जो इतने हमारे दोस्त एकदम ही शहीद हो चुके हैं, अब आज हम शांतिपूर्ण करने के लिए गए थे पर शहीद हो चुके हैं, उनके लिए भी पुष्कर शाही, आप कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है इसको और ज्यादा बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट कंटिन्यू होगा, ये आप पुष्कर आप ये कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, ओके। ये जो सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया है, वो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है वो हटा देंगे उस बैन को, बट उसके अलावा आपके और क्या क्या डिमांड्स हैं? नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस तौर से अभी ये जनरेशन के स्टूडेंट अभी आंदोलन में उतरे हैं, उनका एजेंडा, उनका मुख्य एजेंडा बस करप्शन नहीं होना चाहिए। पर उनको भी पता नहीं है किस तौर से जाएंगे तो करप्शन इरेट होगा। वो जस्ट एग्रेशन में है, उनको बस आंदोलन के तौर से करप्शन को मिटाना है, पर वो भी फिक्स नहीं है किस रास्ता से जाना है हमको। पर आज जो इवेंट उधर घटना घटी, उसकी वजह से लगता है ये आंदोलन और लंबा तक जाएगा। Okay, let me also get in Rajneesh Bhandari, who has been reporting from the ground there in Kathmandu. Rajneesh, you just heard Pushkar Vikram Shahi saying that the protest will continue. In fact, the scale of the protest is only going to grow. What I want to understand from you is, do you see this growing into a broader youth-led political movement in Nepal? How do you assess this? That's a great question at the moment.
So, like, yeah, I listened to what Pushkar said. Definitely, there is a greater, support from all the youths for this protest, and we could see that this might go tomorrow as well, because even right now the curfew is being imposed in Kathmandu, and the protests are still near around the parliament. This shows that this is not going to stop, because normally when the curfew is imposed, there should be silence. There should not be people coming out, but the protesters are on the street. This shows that this will continue tomorrow as well. Right. In fact, पुष्कर विक्रम शाही, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या स्टूडेंट्स जो ग्रुप है, क्या वो ओपन है डायलॉग के लिए? क्या वो डायलॉग करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ? अगर गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ, हम आपसे बात करके इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्या आप अग्री करेंगे? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट अभी आंदोलनरत थे, उन्होंने आज के जो मूवमेंट में जो ऑफिशियल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको स्टेट ये कर दिया था कि कोई भी पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे आज के शामिल नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि आज तक हमारा लीडर कौन है उनको खुद पता नहीं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया है वो एकदम इग्नोरेंट हिसाब में उन्होंने शुरू किया है। इसलिए आज भी अगर गवर्नमेंट ने उनको स्पेस दे ही दिया तो भी वो लोग इतने इग्नोरेंट होंगे कि उनको भी पता नहीं होगा कि वो उनकी तरफ से कौन लोग डिस्कशन के लिए जाएंगे, वो उनको भी पता नहीं है। All right. Pushkar Bikram Shahi there, member of the National Student Union in Nepal. Thank you very much for speaking with NDTV and sharing your views. Rajneesh Bhandari, we heard what the student leader there has to say. Is this entire fight, is it being seen as a fight only for social media access, or is this a deeper generational revolt against this particular government, against corruption, against the entire governance? That's a great question. And as Pushkar was mentioning, when the Gingers started the protest, they were not aware about the number of people, how many people they will turn out, how the protest will take on, how big it will be. Because I was talking with other people as well. They're not very sure how big the protest would be. And Pushkar was right in saying, the Genji, the social media users wanted this to be, a kind of non-political, non-groupist, protest where everyone could come. And they actually said, if you're from political parties, just don't come to this protest. They also said that. But this turned out to be a very enormous protest, bigger than what I think is didn't even imagine as well. But also it also turned out to be very, a protest where 16 people died in this protest, which turned out to be very tragic as well. But coming to the question, whether this is just a social media ban, a protest, or whether this is linked to something about the future, or something about anti-corruption movement in the country. But what I see is this is not just a social media ban protest, because what they have said on street and on social media is that they want to fight against corruption. They want to fight the corruption, and the biggest thing what the protester demand was a kind of transparency in the country, a kind of anti-corruption in the country, where they want to fight against corruption.